Dr. Khushi Guru Bai Thakkar, editor and publisher, Perfect Woman magazine and events. And now super excited to go live with my perfect woman who should be joining in with me any minute. And she is Nasreen Porbandarwala, a transformation coach and an expert who always shares her opinion and gives a proper guideline to all the people's readers and my questioners who keep on asking the questions through mail. And she has been associated with Perfect Woman for almost 2 years now. So let's get going with the beautiful soul who should be joining in, and definitely we are going to learn a lot many things through her. So it's that time now. So let's get going. And I can see all my lovely people joining. Thank you so much for joining in. And here I am sending a request to Nisreen ji. One second. Okay. Yeah, Nisreen, you आप accept करके please join in the room. And I can see all people. Thank you so much. Hello, Nisreen ji. How are you? Hi, I'm good. How about you? Very fine, looking nice. Tell me, how's life? You have been, like almost like in air. Everybody was asking me, where is Nisreen ji? Not alive, long time. तो मैंने कहा हाँ अभी वक्त हो गया है फिर से उनके साथ में लाइव जाने का. Definitely. So you tell me how it has been. बहुत ups and downs life में आए. And you have been a strong pillar of your family. I can, because you have been handling so many clients, so handling your own loved ones wouldn't have been that difficult, but I know the moment that you have faced that cannot be measured with anything. तो इस difficult दौर पे आप निकले, तो how it was the journey, मतलब ये इतना heaviness जो होता है आप में, आपकी फैमिली में, and it happens with many of us, like in everybody faces this, everybody has to taste this. तो उन लोगों के लिए जो लॉस होता है ये, उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? Let us begin with this. There are many questions. आप काफी दिनों से गायब थे. Yeah. So, like you all know, 3 महीने पहले had a very, very tragic occurrence in my life. I lost my mom. She was a pillar of support for me, and she is the reason why I am on earth as it is. So it was a very, very, very trying time, and बहुत मुश्किल था. मैं उससे निकलने में थोड़ा वक्त लगा. And thanks to all the people around me, जिन्होंने मेरे को इतना support दिया, and they were around me, allowing me to grieve. I really honor each and everyone who has really stood by me. And difficult था, लेकिन this is the new normal, जैसे कहते हैं कि अब मेरे को ये मॉम जीना सीखना पड़ेगा. Absolutely, I agree to this. और इसको वैसे भी लाइफ में मॉम की जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. But she is, because like even I have tasted this long back, so I know the feel. Like, it is almost like losing everything at one go, but it is always there. Today also I feel that the pillar, like the strength, even if she's not there, कहते हैं ना माँ जो होती है अपने बच्चों के साथ में, even if she's not there in the world, she's always there. The soul is always there, because like शरीर जाता है, soul नहीं जा रही है. And rest in peace. But yes, of course, कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी है जो हमेशा कनेक्टेड रहेगी आपके भी साथ में, और वो एक प्रॉपर गाइडलाइन भी करेगी. इस तरीके से when we talk about grief, इतने सारा क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, इतने सारे लोगों के अप्स एंड डाउन्स होते हैं. तो अगर जिस तरीके से इफ वी टॉक अबाउट कोई इस तरीके के इसने किसी भी तरीके का ग्रीफ से अगर गुजर रहा होता है, तो किस तरीके से वो अपने आप को कोप अप करे? कितने लोग तो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं. बिल्कुल, ये ग्रीफ ऐसी चीज है कि एवरीवन गोज थ्रू इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. कुछ भी छोटा सा चीज, लाइक मुझे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक इट कुड बी बच्चों के लिए पेंसिल और इरेजर और वो सारा, वो बहुत पसंद है, लेकिन वो घूम जाता है या कुछ मिसप्लेस हो जाता है. फॉर देम दैट इज ग्रीफ. And opposed to that, as we go on in our life, छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बात जो भी होती है, ग्रीफ ऐसी चीज है जो पर्सनल होता है, लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं. This is what everyone believes, but I would say
मेरा मेरा सजेशन ये है लोगों के लिए कि अकेले ये ग्रीफ को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो लोगों का सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। अगर हम लोग ये ग्रीफ को अकेले कोप करने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज वी टेंड टू गो इनटू डिप्रेशन, लाइक यू राइटली सेड। यस, बिकॉज क्या हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, ओवर थिंकिंग हो जाता है। Because when we talk about grief, grief is not just a small thing that it happens and it goes. It's almost like a mental disorder, you can say, because उसमें एक साथ में there are thousands of questions arising in your mind. और उसके बाद में क्या होता है, when you don't get the answers, all of a sudden you tend to feel lethargic, you tend to cut yourself from the world, and then that ends up to a, you can say, disaster which is unexpected for anyone. So better hai when you speak to somebody or you come out of into that light, all of a sudden you feel much better, much relaxed. So यही मैं आपके लिए जानना चाहती थी, because like people tend to hide, बात करने के लिए भी सोचते हैं और अपने आप में ही व्हाट यू कॉल घुटना, समथिंग लाइक दे जस्ट टेक एवरीथिंग इन देमसेल्फ। तो उनके लिए हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू डील विद दिस। सो मोस्ट पीपल जो होते हैं ना, वो ये कोप नहीं कर पाते हैं, और हाँ, दे विल नॉट रीच आउट। बट हम लोग जो इनर सर्किल में रहते हैं, अपना जो लव्ड वंस है, we should keep an eye open for what is happening in our this telltale signs होते हैं when somebody is going through a depression और जो grief होता है, तो वो telltale signs मिल जाते हैं जब लोग किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने आप में अकेले में गुजारना चाहते हैं, या हाँ, तो के सोना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं भी वही कहने वाली थी, यू फील लाइक स्लीपिंग फॉर द होल डे, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, एक लेथार्जिक फीलिंग आ गया है, यू कुछ करने के लिए मूड नहीं हो रहा है। इस तरीके की सिचुएशंस जो अराइज हो जाती है उस उन पेशेंट्स को और वो क्लाइंट्स को, या वो जो विक्टिम है एक्चुअली उस तरीके का, जो जिस दौर से गुजर रहा है, वो किस तरीके से और क्या करे कि थोड़ा उसका माइंड डेवलप हो जाए, या थोड़ा उसका ब्रेन एक्टिवेट हो जाए, थोड़ा उस चीज से बाहर निकल के थोड़ा फ्रेश फील करे, वो कैसे होगा? हाँ, सो वो कैसे होगा ना, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब जब अगर अगर एक लव्ड वन जाके अगर बोलेगा कि व्हाई यू स्लीपिंग ऑल द टाइम, तो वो एक कन्फ्रंटेशनल ये हो जाता है। तो ये जो पर्सन है, वो उसको लगता है कि ऑलरेडी मुझे किसी से बात नहीं करनी है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर कमिंग मी ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। so you have to be very careful the way you address it, the way you talk पर्सन, उनसे आराम से बहुत ज्यादा लविंग एंड केयरिंग तरीके से बात करता है, एंड उनको हर एक कोप करने का एक पेस होता है। एवरीवन हैज देयर ओन पेस। You have to identify and you have to allow that person who is going through that grief process, to allow them, force नहीं कर सकते हैं। I know जब I was going through this process, lots of people said बाहर निकलो, लोगों के साथ मिलो, do something। वो नहीं होता है, you don't feel Yeah. like, but because मेरा जो प्रोफेशन है, मेरी हैंडलिंग स्किल्स वेर अ लिटिल बेटर देन व्हाट अदर पीपल वुड हैव डन, and that is why I was able to jump back better. So the thing to understand is कि थोड़ा have compassion for the other person। बहुत ज्यादा पुश मत करो उन लोगों को, उनके साथ अगर उनको बात नहीं करनी है, बात मत करो। just stay with them, be with them, show them that you support them। that will go a long way। once the person starts feeling comfortable, they'll be open to opening their heart out। I completely agree to this. Talking about on the same, because you've been such a strong practitioner, you've been a mentor, and you yourself has like gone through such a pain, I should say. So how was your feeling? And इस तरीके से निकलने के लिए सबको हम बता रहे हैं, it's easy to say. It's easy to like make people learn about, but when you yourself has been into that same boat, so how was that experience? आप अपने आप को आपने कैसे इस चीज से बाहर लाए? How was the experience?
तो जब ये एपिसोड हुआ मेरी लाइफ में, फॉर अ वाइल मुझे लगा कि मेरी तो दुनिया पूरी हैज कम क्रैशिंग डाउन. मुझे लगा कि आई एम नेवर एवर गोइंग टू बिकम नॉर्मल अगेन. एंड आई वुड से दैट देयर इज नो नॉर्मल. जो मैं पहले जानती थी वो नॉर्मल तो वापस आएगा ही नहीं. अभी भी सारा टाइम ऐसा होता है कि आई रियली वांट टू रीच आउट फॉर माय फोन एंड कॉल माय मॉम के मॉम आप कैसे हो, बात करना है, यू नो. Right. वो होता है. तो वो नॉर्मल तो वो आएगा ही नहीं. तो जब जब ये एपिसोड हुआ तो बहुत टाइम तक यू नो आई जस्ट वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल. मुझे लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता था. यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन टेलिंग पीपल, आप ये मत करो. आई वाज गोइंग एंड there were times, you know, the friends, well meaning friends, उन लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो लोग मुझे आके अब तो इतना इतना टाइम हो गया, बाहर निकलो, जाओ, फिर लोगों से मिलो, यू विल फील बेटर. बट मेरे दिमाग में ऐसे नहीं था. मुझे मुझे किसी से मिलना ही नहीं है. आई डोंट वांट टू. एक टाइम तो ऐसे ही आ गया, मुझे मुझे काम भी नहीं करना है. नाउ आई वांट टू जस्ट लीव एवरीथिंग एंड सिट बैक. But it was support of my husband, who really was such a pillar of support for me. And my friend and mentor, she said it's not happening that way. Yeah, there is no you're not going to yes, I will not let you give it up. She was Absolutely. she really stood for me. And then my Absolutely. family, my father and my sister, they were all you know, there for me. And today here I am. Yes, I agree. And this is what I mean, because you know, it's not just about losing somebody. It can be, a grief can be for any reason. It can be for losing a job. It can be for losing you know, these days, dating is very common. So losing somebody's relationship is also one of the major cause, where I have seen teenagers also getting into grief and like settling down. I have seen many people's घर का story also I know about it. Okay, it comes down to a place where the child, when the teenagers also feel like, okay, I want to give it up now. So इन Exactly. सब situations जैसे होती है, तो उनमें उनको how to deal with those children, how to deal with that situation, उनको किस तरीके से हम ऐसा कुछ realize करें, overwhelming response उनको मिले, and then like they come out of that zone, उन लोगों के लिए किस तरीके से होना चाहिए? So the first thing I would say कि जो अपना जो inner circle, अपने जो loved ones जो होते हैं ना, who see people going through this overwhelm and see people going through this depression, उनको first and foremost, like I said, support देना चाहिए. तो support दोगे कैसे? It's very easy to say support देना चाहिए, लेकिन True. support क्या? क्योंकि the person is experiencing such a, उनको ऐसा लगता है कि पूरा पूरा यू नो दुनिया हैज क्रैश केव्ड इन. आसमान टूट पड़ा है मेरे ऊपर, पहाड़ टूट पड़ा है. So at that time, you know, the first thing to do is you just be with that person, hold their hand and say, I understand what you're going through. And Absolutely. when you say that, the person no, you will never. And you can tell them, yes, I know you feel, I understand, but it's okay, I am there with you. ये होता है अनकंडीशनल सपोर्ट. जब आप वो पर्सन कंडीशनल सपोर्ट देते हो, दैट पर्सन feels के हाँ ठीक है, I can I have somebody to fall back on. Absolutely. ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो रहते हैं लोगों के, बिकॉज काफी टाइम से आपने भी देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनको आंसर्स भी आपकी तरफ से मिलते हैं. काफी लोग शायद काफी क्वेश्चंस हम नहीं पूछ पाते हैं. तो अभी जस्ट आज हम डिस्कस कर रहे थे कि निसरीन जी को हम लोग अभी कहेंगे कि निसरीन जी आपको एक बार हफ्ते में या 15 डेज में आना होगा हमारे साथ में, जहां हम जिन क्वेश्चंस को हम लोग मैगजीन में नहीं कवर कर पाते, एटलीस्ट हम उन क्वेश्चंस को इस मीडियम के थ्रू हम उसके बारे में आपसे बात करें, एंड वी कैन गेट दोस आंसर्स आल्सो. Definitely. So that we can send those people the videos that we share, and then it becomes easier for them also, because
एक जो आंसर्स भी आपके ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि वन लाइनर है, इट इज ऑलवेज विद डिटेलिंग। तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट कवर एवरी वंस क्वेश्चंस, पर बहुत सारे सवालों के क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं पूछ पाते, तो अभी हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि अभी हम उन क्वेश्चंस को वीडियो के थ्रू या पॉडकास्ट के थ्रू, अगर उनको ऐसा है कि हम उनका नाम ले रहे हैं या उनको इस तरीके से नहीं पूछना है, तो हम पॉडकास्ट के थ्रू उनके सवालों के आंसर्स उन तक पहुंचा दें, बिकॉज दैट्स मोर important and that is the main you can say the goal of perfect women audit, so that those people get cured, because ये बहुत ही, और डिप्रेशन और ये सब एंजाइटीज, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं इतने डीप थॉटेड होते हैं, जिनको आंसर्स करना और उन तक पहुंचाना इज वेरी, बिकॉज दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम नसरीन जी, सो उनको तो आंसर्स पहुंचाना हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता है। अभी हाल ही में एक डिप्रेशन की स्टोरी की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, हमारे एक रीडर हैं, उनका एक क्वेश्चन था हम आप ही के लिए, जो काफी टाइम से इस चीज से गुजर रहे थे, जिस तरीके से अभी हमने कहा कि ग्रीफ की बात हम कर रहे हैं, तो उनका ये क्वेश्चन था कि अपने आप में उनको शी विजुअलाइजेस समथिंग, इट्स लाइक वो अपने जब वो रहते हैं तो उनको एंजल्स दिखते हैं, मतलब वो एंजल्स, पर उनका मीनिंग वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या है, और कुछ सोल्यूशन भी उनको दिख नहीं रहा एंड उस, लेकिन उनको बहुत पैल्पिटेशन होती है व्हेन शी विजुअलाइजेस, मतलब इन द मॉर्निंग आल्सो व्हेन शी वेक्स अप, तो उनको ऐसा एक विजन सा आता है जिसमें वो एंजल्स देखते हैं, एंड देन शी इवन मैसेज, उनका ईमेल भी आया है हमें, और उसका कुछ मकसद, कुछ आंसरिंग है या कुछ रीजन है उसके पीछे क्या, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज some reason behind it, बिल्कुल and she has never believed into all these things, और हमारे ही कुछ स्पिरिचुअल रीडिंग के जो स्टोरीज थे वही सब पढ़ने के बाद में, तो वो बोली थी, इज इट बिकॉज मैंने पढ़े हैं इसलिए मुझे वो दिख रहा है, या मुझे इसका कुछ क्योंकि बहुत ज्यादा फैमिली में डिस्टरबेंस है, और हस्बैंड के साथ में कुछ, हस्बैंड का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसका एग्जैक्ट क्वेश्चंस वगैरह जो आया है, मैं टीम को बोलूंगी आपको भिजवाने के लिए, फिर आप उसके आंसर्स वगैरह करवा के आप हम उन तक पहुंचा देंगे, तो वो मुझे एक था कि मैं आपको पूछूं और थोड़ा बहुत अगर आप गाइड कर सके तो। बिल्कुल। सो एक एक ये एनएलपी में जो है, और कि हमारा जो ब्रेन है, जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो हम वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन एब्सोल्युटली ब्रेन का कम्युनिकेशन का तरीका होता है विजुअल्स, and राइट memory is also a form. Memories also are stored in the form of visuals and pictures. So राइट वो जो पिक्चर्स और वो विजुअल्स जो देख रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, when I talk to her or I get a more understanding, I will be able to tell her regarding that. एब्सोल्युटली Palpitations के लिए, yes, palpitations could be because of severe anxiety that she's going through, severe pressure from all around her, you know, जो भी लोग हैं उनके सिचुएशन से या जो भी रीजन से स्ट्रेस एंड प्रेशर है, इसकी वजह से palpitations could be also due to fear, because उनको फियर होगा कि ये कैसे कोप करना, एंड when she not sure क्या है, तो एब्सोल्युटली वो आंसर नहीं मिलेगा, तो उसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है, तो शी इज फीलिंग दैट फियर एंड palpitations आर हैपनिंग। लेकिन राइट बहुत आराम से can do is, there are certain techniques which she can follow, like there is a very very beautiful technique even I use on an everyday basis. It's called the 5-4-1 technique. For like you can look around and see, you can see and notice. Okay, that is 5. 4 4 things here, the fan चल रहा है, बाहर ट्रैफिक चल रही है तो ट्रैफिक का आवाज आ रहा है, तो four things that you can be aware of, 4 things that you can hear. Okay, 3 other smells that she can smell of, uh, uh, and 2 things that she feel, and one. So when she अभी I am traveling on the road, and कुछ ऐसा होता है, like somebody
show off, immediately have a reaction तो रोड में ना हो जाए, इसके the person can immediately look around, जो बोर्ड्स है बोर्ड्स रीड कर लेंगे, लोग जा रहे हैं तो ओके ड्रेस का कलर क्या है, ऐसे करके तो वो जो एक और calming effect है वो आ जाएगा. So this person can try doing this because it's very Wow. Yeah, it's wonderful. In fact, I'd request you to make a video on this and send it across, because this is something which every individual, palpitation is something which every individual goes through one point of time. It could be anything. कई बार तो ऐसा हो जाता है कि सडनली हम कुछ चीज देख लेते हैं तो घबराहट के मारे भी palpitation स्टार्ट हो जाते हैं. तो अगर इस तरीके के कोई टेक्निक्स है जो लोगों तक हम पहुंचा सके, देन इट वुड बी, आई फील, a gift for everyone. तो आपकी तरफ से एक वीडियो अभी मेरा बनता है. बिल्कुल बिल्कुल. और ये palpitation जो पॉइंट है, व्हाई डज इट कम इज बिकॉज एक जो ख्याल आता है तो देन गोइंग टू एन ओवरड्राइव एंड यू ओवर थिंकिंग आता, तो वो क्रिएट करता है एक काइंड ऑफ जो फियर साइकोसिस को क्रिएट करता है, एंड दैट इज व्हाट कॉजेस दिस palpitation एंड एंजाइटी एंड एवरीथिंग. तो उसको बीट करने के लिए दिस 5 4 3 2 1 is a fantastic. Amazing. That's wonderful. That's the reason I always love to come and coordinate with you, because you've been always gifting some of the other techniques that really help others. In because आज के मतलब when we talk about people to be into healing therapies or curing therapies, so everything is like everybody wants people to be in touch with them. But ऐसा कुछ जो हम बताएं और वो लोग उसको करें और definitely उसके results भी 100% है, तो this is one of the best gift what we can gift it to others in the society. And at today's generation, everybody is into stress. I have seen studies के stress बच्चों को है, हर किसी को कोई ना कोई stress, job का stress, और उसके चलते क्या हो जाता है, राह चलते चलते भी लोगों को palpitations हो जाते हैं, जैसे अभी आपने बताया. It can happen anything in any time. तो इस बहुत सारी चीजें हैं जिनके आंसर्स आपके पास छुपे हुए हैं जो आपसे हमको निकालने होते हैं. वैसे अभी अगर मैं आपसे बात करूं इस तरीके, अभी फिलहाल आपके ऐसा कोई क्लाइंट जिनकी कोई स्टोरी हो जो आप हमको बता सके और उसका सोल्यूशन, ताकि लोगों को मालूम पड़े उसके बारे में कुछ. तो आज there are 2 or 3 things basically जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है. one stress, anxiety, you know, जो आसपास से होती है जो प्रेशर, that causes anxiety. The second would one is relation. लोगों को मुश्किल हो गया पहले पोस्ट को इतना हो गया, लोगों को ऐसे लगता and we want to, and that looking for, but ज्यादा और जो फियर होता है, would I be able to handle that, or Absolutely. या मुझे कुछ ऐसा नहीं है. That is the second. Absolutely, because ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं. When we talk about grief also, people complain कि will I be able to come out of it. कितनों को ये fear भी रहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, everything is at the end now. तो वो जो फीलिंग है वो बहुत यू कैन से एक बैड वे तक लेके जा रही है. तो उन इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं उस पे हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? तो हम लोग जब ये सोचते हैं तो हम लोग क्या व्हाट वी आर डूइंग इज तो प्रोटेक्ट कर फ्यूचर में कि यही होने और यही दिस इज गोइंग टू बी ओके. आई एम नेवर गोइंग टू, बिकॉज़ फ्यूचर में खत्म होने ही नहीं वाला है. बट what we can do is come back to the moment. अभी ये है I the future एक पता है
acknowledge and honor myself for going through this and going to stay with अगर Absolutely. when I'm to push it away कि मुझे नहीं चाहिए तो हम push कर and that become more and more so हम Absolutely. वो छोड़ के तो कि I am honor in the present moment going to allow myself to acknowledge that ये हो रहा है then things I completely agree to this. आपकी learnings में थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही थी, पर I can understand and yes, much better. Yes, it is better. It is much better now. Yes, so it is 100% आपने जो कहा और and when we talk about like I have seen even you today because जब हम job की बात करते हैं काफी कंपटीशन बहुत होता है कंपटीशन के साथ साथ failures are the very common thing what people children also like teenagers also when they jump into the field of working class तो उनको फेलियर्स मिल जाते हैं तो उन लोगों को हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन उनके बहुत सारे पेरेंट्स के भी हम लोगों को मैसेजेस आते हैं कि कभी हाल ही में बड़ौदा या सूरत से कोई लेडी ने कॉल किया था तो उनकी डॉटर ने बहुत जगह पे एप्लीकेशन दिया और रिजेक्शन की दो शी इज गुड फ्रॉम एंड शी हैज डन हर एमबीए आल्सो बट रिजेक्शन हैज बीन अ मेजर कॉज फॉर हर डिप्रेशन and she was in fact wanting us to get some counselor to be like कोई counsel करे बच्ची को कोई handle करे बात करे तो we were like okay we can definitely work out but the girl was not ready to talk to the daughter was so the mother was very much upset enough because like she has spent years in making her study and despite of all these things why she's not able to get a good job so what must be the reason for it and is it something that like she was like okay everything is there's no point in getting some job I have tried 16 to 17 different multinational companies but still I'm unable to get a job so this was something which was very very crucial and it was very touchy also we are also very much taken aback with this question so what could be the reason for it कि so this is बच्ची हर जगह रिजेक्ट हो रही है क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है so this is a very, very important I think 50% of my with this kind of so the thing is होता है I think echo हो रहा है हाँ नहीं अभी मुझे अभी सुनाई दे रहा है आपकी आवाज so ये रिजेक्शन जो फेस करते हैं it is all because of the fact that there is of और एक हमारे तो वो एक तरह हो जाता है I'm not going to yeah it was like the girl always the mom was telling me कि she comes home and she says okay everything is at end now मुझे कुछ नहीं करना है the day is my and like a self confidence because of so many of rejections क्या हुआ है उसके साथ में उसका confidence भी lose up हो चुका है बिल्कुल बिल्कुल and that is exactly what she can do if she doesn't need to go to directly to a counselor or therapist but what she can do is some kind of an inner जहाँ पे she can understand तो ये है उसका root cause क्या क्या कहाँ से and that will overcome this I know because the mother was telling me शायद किसी ने कुछ कर दिया है and I was like oh it could be possible but it's hard to believe now so I said मुझे बोल रही शायद से किसी ने कुछ कर दिया है otherwise my daughter is like वो जहाँ पर भी मतलब schooling से लेके education तक she was always on top now suddenly this has happened and so many of rejection so definitely people are jealous and all I said see this is again something which you have to tell the universe that you have to be positive about yourself if you yourself start thinking negative then world can the universe भी आपको negatively उस पे impact आएगा so ये एक चीज जो है very dominant एक
you know, it's a thought process in India especially कि कुछ भी थोड़ा ये होता है तो we attributed को किसी नजर लग गई या किसी ने मुझ पे कुछ कर दिया है. अग्री नजर लगी है, मैं ये सोच लिया कि मेरे वाला है तो वो मैं चाहती थी आपके साथ में एक सेशन इस चीज पे, क्योंकि अगर हम बात करें, वी आर स्टेइंग इन अ कंट्री वेयर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन arises very first thing that comes to any child, any mother, anybody's mind के कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो इट्स लाइक डन बाय एनीबॉडी. किसी का कर्स है, किसी का नजर है, कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी ने कुछ कर दिया है. सो इन सब के लिए आई वांटेड टू कीप अ स्पेशल सेशन, और वो भी 15-20 दिन पहले ही उसका प्रमोशन स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज जब इसकी बात करेंगे तो क्वेश्चंस भर भर के आएंगे और उसके आंसर देते देते शायद हम सब थक जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक इट वुड बी वंडरफुल लोग ये अवेयरनेस क्रिएट करें. देखो, आई एम नॉट टेलिंग हो समथिंग व्हिच वी आर नॉट अवेयर, तो हो सकता है, लेकिन हर वो चीज जो होती है उसको मैं ये एक्सेप्ट, तो दैट एब्सोल्युटली. तो वो हमको समझ लेना है. यहाँ पे भी नो टाइम. राइट. और अभी अभी अगर मैं आपसे पूछूं, एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस. या तो अभी अगर मैं पूछूं कि इसको आप क्या एक पॉइंट, बिकॉज मैंने अगर इस वीडियो के थ्रू, इस इंटरव्यू के थ्रू, इसके जरिए उनको एक मैसेज जा सके कि व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हर रिजेक्शन, एंड बच्ची जो डिप्रेशन में जा रही है उसके लिए क्या सोल्यूशन, या क्या आप उनको कुछ टिप देना चाहेंगे? ओके, मैं एक ही दे सकती हूँ. आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ इफ आई हैव परमिशन टू शेयर. यस 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 मैम, यस मैम. ओके, हम लोग जब चिल्ड्रन को, जब व्हेन वी आर ब्रिंगिंग चिल्ड्रन, आई थिंक पेरेंट्स एट वन वुड हैव टोल्ड, अगर ये बच्चा कर रहा है, व्हाट डज पेरेंट्स से, तो एक जगह कमरा. एब्सोल्युटली. मैं भी जब छोटी थी मेरे साथ ऐसा किया. लेकिन जब मैं वो छोटी बच्ची क्या, अरे रिजेक्ट कर, मेरे को टेंशन नहीं दे रहा है, तो वो मेरे दिमाग में एक एक घर कर जाता है कि आई एम एम्प्लीफाई होते होते बाय द टाइम वी कम टू टीनेज, दिस यू नो इट बिकम सो बिग कि we set ourselves for failure, set ourselves up for failure. That is, कोई you know, there will be no guy who will like me. Why? Because I am always rejected. वही मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि everyone has rejected me, everyone is going to reject me, मेरा कुछ होने वाला ही नहीं है. जॉब आएंगे तो भी यही होगा. That is why I said, you know, she needs to go. I'm not telling कि छोटी बच्ची, it could have been as of yesterday also. लेकिन अगर वो आइडेंटिटी और उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो देन आई एम 100% श्योर कि शी विल गेट अ जॉब. वो एक एक पॉइंट वन भी नहीं है कि उसको जॉब नहीं मिलेगा. जॉब. Understood. So definitely I'll convey your message, and I'll definitely tell her to be in touch, and so that like we can find out some solution, and जो confidence जो lose out हो चुका है mind से, उस चीज को वापस से हम cope up कर सके, and then as you said she can definitely get some good job also, so we cross finger for her positive things also. And tell me something about you, like if you have been for a long time, इस बीच में ऐसा कोई any memory, the best memories that you'd like to share with Perfect Woman? हम लोग we had a very association, and I that मेरा जो growth from where I am today. Perfect Woman has been a very instrumental, you know, and a very in my growth. And for that, Thank you so much. I'm extremely grateful to the entire lovely lady sitting.
Thank you so much. It's all about your love and affection because I know you're such a sweetheart, and you have been, like, very practical when it comes to answering questions, and I have seen you. That's the reason that somewhere it's like the soul connection, that we feel that like the mentor is a perfect mentor and perfect expert or perfect woman who has always been guiding people and supporting people in a right way, because it should be, like, unconditional. When we Absolutely. think about the society, it has to be unconditional. When we are giving the answers, it should be, like, somebody should be well fed enough and they should be having good results. और वो मैंने हमेशा आपसे आपके answers में देखा है. So it is wonderful to have you on the panel list as one of the expert or perfect women, giving the best answers and guiding people for, you can say, perfect transformation. Thank you so much. And I am looking extremely passionate transformation because I want to see the world better. I want people to be. I want the world like perfect woman. So I call it. I want everyone to have that. Absolutely. Absolutely. Thank you. Thank you so much, Nisrinji. Thank you so much for sharing your space and your time with Perfect Women. आज थोड़ा सा network का ups and down लगा, maybe because of the season is, wet season है, so it's natural signal issue होगा, but it's wonderful to be having connected with you, and it is very soon. Next आपका जो है उसका कार्ड बना करके हम date fix up कर देते हैं, and we'll be talking about nazar and all that things. Yes, तो please. ये हम अभी डिसाइड कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट का डेट अभी आउट कर देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है ना. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन. यहाँ मैंने एक का मैसेज पढ़ा था कि पीस ऑफ माइंड के लिए क्या करना चाहिए, ये आप उनको एक पिन दे दीजिए. मैंने ऑलरेडी वो पीस ऑफ माइंड के लिए जो मैंने चेक किया है 5432, अगर वो डिलीजेंटली अगर जो भी है वो करे तो give that you know. डेफिनेटली मैं उसके लिए आपसे अलग से वीडियो वीडियो आपको कह ही दिया. दैट्स माय थिंग. लाइक मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो आप मुझे बना के फॉरवर्ड कीजिएगा, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विद एवरीवन. एंड इन द मीन टाइम, थैंक यू एवरीवन हु हैव बीन अ पार्ट इन दिस जर्नी, और आपको भी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी ऑलवेज. थैंक यू. टेक केयर मैम. टेक. बाय.